With your kind permission, sir. Sir, I will open up the defense arguments, sir, by placing my reliance on 1995 MLD, page 562. 1995 MLD, page 562. A judgment. Ji sir, 1995 MLD, page 5. Affair is the index of a case, a prelude to all the events which are supposed to come later on in the case. But in the instant case, we are confronted with an affair which is deficient in material aspects. And the affair, the deficiency has been supplied by the alleged eyewitnesses. Sir, allow me to read the affair, sir. सर, तारीख वक्त वकुआ 21/6/2020 बवक्त 11:30 17:30 शाम. दिस इज द टाइम ऑफ अकरेंस, योर ऑनर. और तारीख वक्त रिपोर्ट है 22/6/2020 बवक्त 8:10 सुबह ऑन द नेक्स्ट डे. The body of the affair reads, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना के चलास जनाब अली, गुजारिश है कि साहिल खिनर चचिकी का सुकूनती हूँ, पेशा ज़मींदारा है. कल मोरखा 21/6/2020 को बवक्त तकरीबन 5:30 बजे का वाक़या है कि साहिल का बेटा मोहम्मद आलम अपने घर से मोटरसाइकिल पर सामान लाने के लिए बिशनी दुकान चला गया था. वापसी पर रास्ते में बमकाम चिचिकी, माई एम्फेसिस योर ऑनर, बमकाम चिचिकी मुसम्मियान नसीर वल्द शाह आलम, अंबिया इबादुल्लाह तलहा पिसरा नशेब साकिनान खिनर ने रास्ता रोककर पत्थरों से वार करके शदीद जख्मी किया था. साहिल ने अपने बेटे को बगैर इलाज मुआलजा आरिज की अस्पताल चिलास पहुंचाया था कि जरबात की ताब न लाते हुए जाबाक हुआ. वकुआ हाजा को मोहम्मद साबित वल्द मोहम्मद रमजान, दी अरेज्ड आई विटनेस, मोहम्मद खलील वल्द जमशेद साकिनान चिचिकी खिनर ने बचश्मे खुद देखा है. वजह अनाद मालूम नहीं है. दावेदार हूं कानूनी कार्रवाई की जाए. So, you know, this is the story of the affair. Now, if you see the 161 से, किसी भी एक गवाह का सर 161 जो है वो मुलाजा फरमाएंगे. सर मेरे सामने है ये इसका खलील का सर, इसका कुछ सर जो पहले वाला पार्ट है मैं पढ़ देता हूं. बदरियाफ्त बयान किया है कि मजहर खिनर चिचिकी का सकूनती और बाशिंदा हूं, पेशा जमींदारा है. कल मोरखा 21/6/20 को बवक्त 5:30 बजे से पैर का वाक़या है कि मजहर हमरा मोहम्मद साबित वल्द मोहम्मद जमान सकना खिनर चिचिकी रोड के किनारे मौजूद थे. हमसे कुछ फासले पर मुलजमान तलहा, अंबिया पिसरा नशेब, नसीर वल्द शाह आलम साकिनान खिनर चिचिकी भी मौजूद थे. इसी दौरान बिशर लोगों की मदद से मोहम्मद आलम को मौके से उठाया, लेके घर गए, जहां पर मोहम्मद आलम को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई. मोरखा 22/6/2020 के सुबह मोहम्मद आलम को तकलीफ ज्यादा हुई तो आलम को उसके वालिद और दीगर रिश्तेदारों के हमरा मजहर और मोहम्मद साबित भी हमरा होकर बजरिया गाड़ी चला अस्पताल लाए. अस्पताल पहुंचते ही मोहम्मद आलम जरबात की ताब ना लाते हुए जहां भाग हो गया. सो योर फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू मेक आउट इज the bare reading of the FIR reveals the complainant as an eyewitness. जब आप FIR को पढ़ते हैं तो लगता है कि complainant जो है he is in the eyewitness. उसमें sir there are certain very important details which are missing in the FIR. Particular place from where the alleged eyewitness have seen the occurrence, gathering of people at the place of occurrence, mode and manner of taking the injured to home and spending a complete night by him in the house. And fifthly, sir, the timings at which the injured was brought to hospital is also missing in the affairs. And these omissions have been supplied by the eyewitnesses. Your Honor, I would refer the cross-examination. Sir, PW1 जो है complainant, उसकी
Cross examination, page 2, last lines. PW1 page 2 last lines. ये सबसे आखिरी लाइन जो सर. When I reached home, PW Sabit and Khalil were already present in my home. PW Sabit and Khalil informed me about the incident. Page 2. Page 2 sir. Cross examination. ये PW1 page 2 last lines. Last line में सर complainant कहता है when I reached home, PW Sabit and Khalil were already present at my home. PW Sabit and Khalil informed me about the incident. इसी पेज नंबर 3 की सर नीचे से 8वीं लाइन देखिएगा सर. नीचे से 8वीं लाइन. It is correct to suggest that I am not the eyewitness of the occurrence. The application exhibit PW1/A was in line with the information provided to me by the eyewitnesses. सर इसी के थोड़ा सा ऊपर 8th के 4 लाइनें ऊपर मजीद देखिएगा सर. पेज 3 इसी 8th लाइन से ऊपर सर 4 लाइनें ऊपर. PW Sabit and Khalil took the dead body to the emergency, while I went to the police station for lodging FIR with the application exhibit PW1/A. When I went to the police station for lodging FIR and returned back up about 15 minutes with the police at RSQ Hospital Chilas, I do not know the exact time at which the police reached the hospital. I do not remember at what time the police reached the hospital. It is correct to suggest that I am not the eyewitness. Your Honor, the complainant has admitted that he is not the eyewitness. When he reached his home, the PWs were present there. The details were solicited from the PWs. Now the question arises that when these two persons were present in the home, why these details are missing in the FIR? कहाँ से देखा, कहाँ से उठा के लेके गए, घर में उसने कंप्लीट रात गुजारी, उसकी मेडिकल कंडीशन कैसी थी, अस्पताल कब लेके गए, किस टाइम पे पहुंचे, ये सारी डिटेल्स जब ये PW सर अलेजेडली मौके के वक्त भी मौजूद हैं, ये घर पे भी मौजूद हैं, ये अस्पताल में भी मौजूद हैं. और कंप्लेनेंट का कहना ये है कि मैंने सारी डिटेल्स इनसे पूछी. जब इनसे पूछी तो ये फिर मिसिंग क्यों है इसमें FIR? दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट. Your Honor, I would refer the in chief of PW1. Sixth line from the top, sir, in chief की. We took the injured to home, gave him first aid, and on the next morning at about, we took him towards hospital and reached RSQ hospital at about 8 a.m. इसी के बाद सर ये 3 लाइनें छोड़ के सर इन चीफ में ही. आफ्टर ऑन my own investigation from the witnesses, I found one of the accused, namely Ibadullah, innocent. Therefore, I told the SHO that accused, namely Ibadullah, is not involved in this incident. Now again this question arises, Your Honor, कि witness जो हैं मौजूद हैं घर पे, witness जो हैं allegedly मौजूद हैं, उन्होंने वकूआ देखा, allegedly hospital में मौजूद हैं. What was the need of investigating from them again? कि कौन उसमें मौजूद था, कौन नहीं था? रीजन ये था कि इबादुल्लाह को इसमें इम्प्लीकेट किए गए, ही वॉज एन आर्मी पर्सन और उस टाइम पे वो अपने यूनिट में था. तो देयर बाय रियलाइजिंग द मिस्टेक कि बाद में फेटल हो सकती है, ही सेड कि ये उसमें नहीं था. मैंने जब उससे इन्वेस्टिगेशन की तो ये मौजूद नहीं था. और ये प्लीज दे ये सर इसकी यूनिट का अटेस्टेड अटेंडेंस रजिस्टर का जो है वो एक्सट्रैक्ट. PW1 क्रॉस एग्जामिनेशन इसकी देखिएगा, पेज नंबर 4 सर. थर्टींथ लाइन फ्रॉम द टॉप सर, पेज नंबर 4, 13th लाइन फ्रॉम द टॉप.
After lodging the FIR, I sought the details from the PWs and come to the conclusion that accused Ibadullah is innocent. I sought the details from the PWs after 2-3 days of lodging the FIR. There was, Your Honor, there was absolutely no occasion to ask the witnesses again. ये 2-3 दिन बाद पूछने की जरूरत क्यों पड़ी जब allegedly prosecution ये कहती है तो हर जगह मौजूद थी. इसके बाद Your Honor, मैं जनाब की तवज्जो जो है वो दिलाना चाहूंगा towards the place of occurrence. 2003 से 141 में सर ये जो अब तक की जो बात है इस पे सर मैं एक साइटेशन पे रिलाई करना चाहूंगा एंड दैट इज 2003 SCMR पेज 1419. Sir, this citation reads, first information is normally considered as a cornerstone of prosecution case unless it is shown that on account of some malafide intention a wrong version of the complainant was recorded by the investigation agency with a view to allow the real culprits to go scot-free and to involve innocent person in the commission of the offense of the complainant. In order to misguide the investigation, lodged false report, that is FIR or supply statement with ulterior motive. And this is not the case because the complainant in this case is the real father. Yes. You know, the second submission I want to make is with respect to the place of occurrence. You know, kindly see the complaint. जो फर्द बयान है जो इन्होंने तहरीरी दरखास्त दी है जिस पे FIR लॉन्च हुई. आपके सामने है सर. सर इसमें ये देखिएगा कि ये जो है वो बाकी सारी सर मैं नहीं पढ़ूंगा. मोटरसाइकिल पर सामान लेने के लिए बिशनी दुकान चला गया था, वापसी पे रास्ते पे सो एंड सो अक्यूज ने उस पर हमला किया. इसमें प्लेस ऑफ अकरेंस का कोई जिक्र नहीं है. ये कंप्लेंट ये जो अगर ये वर्बल स्टेटमेंट होती तो वी वुड हैव एक्सपेक्टेड सम ओमिशन एट द पार्ट ऑफ द कंप्लेनेंट. ये रिटन एप्लीकेशन है सर, इसमें कहीं प्लेस ऑफ अकरेंस का जिक्र नहीं है सर. अब सर FIR देखिएगा. FIR की सर चौथी लाइन है, वापसी पर रास्ते में बमकाम चिचकी. एक चीज सर जो तहरीर दरखास्त में नहीं है वो FIR में मौजूद है. इसमें सर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आई वुड से कि अगर ये वर्बल एप्लीकेशन होती तो ओमिशन एक्सपेक्ट की जा सकती थी. उसमें भी कंप्लेनेंट की सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जरूरी थी कोई चीज ऐड ऑन करने के लिए. ये तो रिटन दरखास्त, कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट उसके बाद नहीं आई. और इस पे सर आयु का जो क्रॉस है, क्रॉस एग्जामिनेशन पेज 19 सर, PW5. PW5 page 19.
My lord, page 19, start of cross-examination, fifth line from the top. Fifth line है सर, आपकी इजाजत से मैं पढ़ता हूं इसको. It is correct to suggest that when a complainant comes to the SHO for lodging FIR and verbally reports an incident to the police, after scribing the FIR, read over the contents of the FIR to the complainant. And when a complainant comes to the SHO for the SHO for lodging FIR with written application, then the police lodges FIR according to the contents of the application submitted. The police cannot add or subtract contents of the application submitted by a complainant. I lodge the FIR in hand immediately after receiving the application submitted by the complainant. It is correct to suggest that the complainant have not mentioned the exact spot on which deceased was stopped and attacked by the accused. It is correct to suggest that the complainant have not recorded any supplementary statement nor have inserted the exact spot in his application for lodging FIR. It is correct that I have mentioned the name of place Chechiki in my FIR number 11 of 2020 as the place of occurrence. So your Honor, कोई supplementary statement नहीं है, complainant का कोई initial नहीं है जहाँ उसने इसको add किया हो और initial किए हो, और आयु जो है उसने चचकी जो है इसमें insert किया और वो admit करता है मैंने insert किया without having any supplementary statement from the complainant. इसमें सर the citation I would be relying upon is 2016 SCMR page 274, Your Honor. I was unable to get a copy of it, sir. इसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि जहां कहीं पुलिस डॉक्यूमेंट्स में इंटरपोलेशन है किसी भी किस्म की, तो द ऑनरेबल कोर्ट शुड बी एट गार्ड व्हाइल examining and judging the evidence led in the prosecution case. And this is not a negligible interpolation, sir. और सर ये जो प्लेस ऑफ अकरेंस से रिलेटेड जो स्टांस है कंप्लेनेंट का, it gets belied by the affidavit submitted by the complainant. बेल स्टेज पे सर जनाब के पास फाइल में अगर मौजूद हो ये सर बेल स्टेज पे ये एफिडेविट सबमिट किया गया सर. ये एफिडेविट था विद रिस्पेक्ट टू द कंप्रोमाइज एंटर्ड इन बिटवीन द पार्टीज विद वन ऑफ द अक्यूज्ड नेमली नसीर. इनके साथ जो कंप्रोमाइज हुआ उससे रिलेटेड एफिडेविट सबमिट किया गया, एक सेल्फ कॉइंड एफिडेविट था. इसमें प्लेस ऑफ अकरेंस मेंशन की गई गुडुम सर. इस एफिडेविट में सर मेंशन किया गया कि गुडुम सर वो जगह है जहां पे डिसीज पे अटैक किया गया था. अब सर ये जो पर्टिकुलर स्टांस है इनका विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ अकरेंस, इट आल्सो गेट्स बिलाइड बाय द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट सर. ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन का पेज 1 है सर कंप्लेनेंट का, ये जरा मुलाहिजा करेंगे सर. सर ये स्टार्ट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन PW1 सर, जहां से क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है सर. माई हाउस इज सिचुएटेड एट विलेज चिचिकी. द अक्यूज्ड आर रेजिडेंट्स ऑफ विलेज गुडुम सर. Gudum sir is at a distance of 1 kilometer from Chichiki. We have entered into a partial compromise on the basis of contract with accused Nasir. We have submitted an affidavit at the time of bail of accused Nasir, stating that a compromise has been effected with accused Nasir outside the court. The said affidavit has been chalked in jirga. The affidavit was read over to me. After that, I put my signatures on that affidavit. It is correct that the said affidavit, the place of occurrence is mentioned as Gudum sir. ये जो मैंने जनाब को दिया.
Self-stated that said portion in the affidavit is self-made. It is correct to suggest that the volunteer portion runs correct counter to the contents of affidavit that is duly submitted by the complainant and is part of a court file. It is correct to suggest that in Exhibit PW1/A, the exact place where the deceased was attacked is not mentioned. Village Chichiki have almost 20 households. It is correct that I have not mentioned specific point where the attack took place in my application. सर इसने एडमिट किया है कि मैंने जो एफिडेविट सबमिट किया उसमें गुडुमसर है. सर इसका जो इन चीफ है मैं अगेन रेफर करूंगा. कंप्लेनेंट का सर इसमें सर देखिएगा इट इज ऑलमोस्ट द थर्ड लाइन. द एक्यूज्ड प्रेजेंट इन द कोर्ट नेमली तला अंबिया एंड नसीर हैड ब्लॉक्ड द रोड एट चिचिकी. कंप्लेंट में नहीं, इस्तगासे में नहीं है सर, एफआईआर में है, फिर इन चीफ में है चिचिकी का जिक्र. और वो कहता है सर जो एफिडेविट सबमिट किया कंप्लेनेंट ने खुद उसमें कहता है जी ये प्लेस ऑफ ऑफेंस जो है वो गुडुमसर है. और जो क्रॉस एग्जामिनेशन उसमें ये भी कहता है कि चिचिकी और गुडुमसर जो है इसमें इसका जो इंटरसी डिस्टेंस है दैट इज 1 किलोमीटर. दैट इज इररिकंसिलेबल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस. इसके बाद माय लॉर्ड आई वुड बी रेफरिंग दी इन चीफ ऑफ PW4 sir, one of the eyewitnesses. PW4 का इन चीफ सर इसका ये जो स्टार्ट हो रहा है सर. Stated then that on 21/6/2020, I along with PW Khalil were walking slowly towards Bishani Bazaar. We saw deceased Muhammad Alam returning from Bishani Bazaar with some groceries and reached Gudumsar. Now this is very important, sir. And reached Gudumsar. Suddenly accused Nasir, Tala and Ambia started pelting the deceased with stones. So, Your Honor, place of occurrence missing in the complaint, appearing miraculously in the FIR, then again in the in chief of the complainant, which is contradictory to the affidavit submitted by him, and the in chief of this PW, who is an eyewitness. Sir, kindly see the cross examination of this witness PW4, page 13, 10th line from the top, sir. दसवीं लाइन है सर ऊपर से. The house of accused are situated at a distance of about 15 to 20 paces from the place of occurrence. 15-20 कदम के फासले पे मुल्ज़िमान का घर है. It is correct that the house of accused are situated at गुडुमसर. तो सर अगर गुडुमसर और चिचिकी में 1 किलोमीटर का फासला है और जाए वकुआ से इनके घर 15-20 कदम पे दूर हैं, तो फिर सर हु विल मेक आउट कि ये जगह जो है ये गुडुमसर थी या चिचिकी थी? योर ऑनर, इन दिस रिगार्ड आई वुड प्लेस माय रिलायंस अपॉन PLD 1963. इसमें PLD 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 17 सर. इसमें सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया प्रिंसिपल ऑफ री बेनिफिट ऑफ डाउट से. वो री बेनिफिट ऑफ डाउट इसको इसलिए कहा गया कि एक विटनेस ने कहा कि हमारी जो स्टेटमेंट थी वो हॉस्पिटल में हुई, आईयू का कहना यह था कि ऑन द स्पॉट हुई. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन किया कि अब कोर्ट के पास कोई ऐसा गॉज नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो दोनों विटनेसेस को लगाया जाए और जिससे पता चले कि सच कौन बोल रहा है. तो ये इररिकंसाइलेबल कॉन्ट्रडिक्शन है इन दोनों के बयानों में. इसलिए द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट एंड री बेनिफिट ऑफ डाउट वुड गो टू द एक्यूज्ड. तो सर ये इररिकंसाइलेबल डिफरेंस है कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट में और PW's की स्टेटमेंट.
सर अगर हम मान लेते हैं कि चिचिकी जो है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स वाज द प्लेस ऑफ अकरेंस, तो देयर शुड हैव बीन वेरी एंटाइसिंग रीजन फॉर अटैकिंग द एक्यूज देयर, क्योंकि चिचिकी जो है वो रेजिडेंस है कंप्लेनेंट की, जहां ये कहता है कि हमारे रिश्तेदारों के घर हैं। अगर ये स्पेशली वहां जाके इन्होंने अटैक किया तो उसका कोई बहुत बड़ा रीजन, कोई मोटिव होना चाहिए, एंड दैट मोटिव इज मिसिंग इन द अफेयर। कंप्लेनेंट कहता है कि वजह एनात जो है वो मालूम नहीं है। योर ऑनर, इस उसमें काइंडली सी द क्रॉस ऑफ PW1, पेज 2। साहब ये पेज 2 है, PW1 का क्रॉस, और ऑलमोस्ट जो है 7th लाइन फ्रॉम द टॉप सर। Before the incident, the accused had threatened my son with dire consequences many times. We did not report about the threatening of the accused to police station. Self-stated that threatening is common in our area. It is correct to suggest that I have not mentioned about any threatening and quarrels in my application exhibit PW1 over. FIR में कहा कि वजह एनात जो है वो मालूम नहीं है, यहाँ कहा कि हमें धमकियां दे रहे थे, फिर कहा कि मैंने इसको FIR में कहीं ये बात मेंशन नहीं की। सर PW4 की क्रॉस एग्जामिनेशन मुलाजा फरमाएंगे, पेज 14। पेज 14, 13th लाइन फ्रॉम द टॉप। सर पेज 13, पेज 14 है, 13 line from the top. I used to visit the house off and on, and prior to the occurrence neither any quarrel took place in between the deceased and accused, and nor the deceased was ever threatened by the accused. ये आई विटनेस कहता है सर कि मेरा इनके घर आना जाना रहता है, उससे पहले इन्होंने ना कभी इसको थ्रेट किया ना कभी कोई धमकी दी। इसके बाद सर आई वुड बी रेफरिंग द इंक्वेस्ट रिपोर्ट्स। कॉलम नंबर 1 देखिएगा इंक्वेस्ट रिपोर्ट का। नाम मकाम जहां मौत वाक़ई हुई, चिचिकी किन्नर। इंक्वेस्ट रिपोर्ट के कॉलम नंबर 1 में प्लेस ऑफ डेथ जो है वो चिचिकी है सर, और इसका जो इंप्रूव्ड वर्जन है इन चीफ में कंप्लेनेंट का, उसमें वो कहता है कि हम उसको हॉस्पिटल लेके गए एंड ही डाइड एट द हॉस्पिटल। In the said regard, Your Honor, kindly see the cross of PW1, page 2 and ninth line from the bottom, sir. It is correct to suggest that when my son was brought home, he was unconscious and blood was oozing from his head. देखिए सर, आपने पेज 2 है सर, पेज 2 है, और नीचे से बॉटम से 9th लाइन सर मुलाजा फरमाइए। Sir, it is correct to suggest that when my son was brought home, he was unconscious and blood was oozing from his head. अब सर PW4 का क्रॉस जो है
page 15. Page 15, third line from the top, sir. Sir, third line from the top. When we lift the injured deceased from the place of occurrence, blood was oozing from the head of deceased. It is correct that when we lifted the injured from the spot, blood was oozing from his head and the blood trickled down on many spots. अब इसके बाद PW5 जो है, आइए उसका क्रॉस मुलाहिजा फरमाइएगा एट पेज 24. Your Honor, second line from the top, page 24. It is correct that I have not seen any trail of blood at the place of occurrence. It is correct that there exists no FSL report till now on the record regarding the cross match of blood secured from the place with blood-stained shirt of deceased. It is correct that I have not mentioned in site plan of occurrence whether the stone recovered were blood-stained or not. PW4 का कहना ये है कि सर when we lifted him from the place of occurrence, blood trickled down on many spots, और इसका कहना ये है कि मैंने कोई trail of blood जो है वो नोट नहीं की उसमें. Sir, I would like to draw your kind attention towards the site plan. सर इसमें अब जो साइड प्लान में देखने की बात ये थी कि सर ये जो अलेज्ड अक्रेंस है कि पत्थर लगे, वो गिरे, मुख्तलिफ जगह पे उसका खून गिरा, वहाँ से हम उठा के इसको लेके गए. तो वेदर द साइड प्लान ऑफर्स एनी सपोर्ट टू द प्रोसिक्यूशन केस. इसमें मकाम नंबर 5 जो है सर, मकाम नंबर 5 वो मकाम है जहाँ मकाम नंबर 1 पर मकतूल मोहम्मद आलम पर मुल्जमान के पत्थर लगने से इसी मकाम पर गिरा है. इसी मकाम पर मकतूल की ज़रबात से निकला हुआ खून एक बड़े पत्थर पर मौजूद पाकर बजरिया रुई उठाकर बजरिया फर्द जो है बतौर सबूत कब्जा पुलिस में लिया जाना बयान हुआ. पॉइंट नंबर 5 ऑफ इस साइट प्लान सर. सर विटनेसेस की पॉइंटेशन पे ये बनाया गया है एलिजिडली, और पॉइंट नंबर 5 पे ये कहते हैं एक बड़े पत्थर पे उसका खून पड़ा हुआ था जहां से हमने उठाया, और पॉइंट नंबर 5 पे कोई पत्थर शो नहीं किया गया सर. नीदर एनी ट्रेल ऑफ ब्लड हैज बीन नोटेड बाय द आईओ. ये मैं रिलाई करना चाहूँगा 2020 PCRLJ पेज 133 20 PCRLJ पेज 1333. इसमें सर होल्ड किया गया कि ब्लड सैंपल्स की जो प्री रिक्विजिट है कि अनलेस ब्लड स्टेन्ड अर्थ और कॉटन एंड ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ्स ऑफ डिसीज विक्टिम आर नॉट सेंट with same for opinion of serologist to effect that it was human blood and was of same group which was available on cloths of deceased victim and blood stained earth cotton, such inconclusive opinion cannot be used as piece of corroboratory evidence.
Your Honor. Your Honor, the next point that I want to make is, since currently I'm discussing the FIR and the credibility of FIR, the next point is the complainant implicated 4 persons, including accused Abadullah. Sir, इसमें